launched by the European Ariane rocket, reached its final geosynchronous orbital home in June 1981 with the help of a rocket motor developed in India. Aryabhatta, the two Bhaskara, as well as Apple, were launched free of cost, which reflects India's successful international space cooperation policy. In the recent past, India has not only flown foreign scientific instruments on board Indian spacecraft but has also launched them. Two further significant satellite communication experiments that deserve a mention here for its ingenuity and spirit of cooperation are SITE. SITE, full form SITE, SITE means S for satellite, I for instructional, T for television, E for experiment. Satellite इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट 1975-76 में हुआ था. स्टेप STEP स्टेप्स, S फॉर सैटेलाइट, T फॉर टेलीकम्युनिकेशन, E फॉर एक्सपेरिमेंटल, P फॉर प्रोजेक्ट. स्टेप सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट 77 to 79 comprehensively comprehensive establishing the uses of satellites for communication and broadcasting and providing hands-on experience for the same, paving the way for inset का मतलब इंडियन नेशनल सैटेलाइट, inset का मतलब इंडियन नेशनल सैटेलाइट, आई एन मतलब इंडियन नेशनल, सेट मतलब सैटेलाइट, इंडियन नेशनल इनसेट मीन्स इंडियन नेशनल सैटेलाइट सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स. किसके किसकी वजह से ये पेविंग, ये कैसा निकला, इसकी वजह से निकला, साइट और स्टेप की वजह से निकला. टू फर्दर सिग्निफिकेंट सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट्स, जो ये एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, जरूरी जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट जिसकी वजह से हम लोग को इनसेट मिला, वो कौन से थे? साइट जो 75-76 में आया था, स्टेप आया था 77-79, 77-79 में आया था, 75-76 में साइट आया था, साइट और स्टेप आया था 77-79, जिसकी वजह से इनसेट हम लोगों को मिला. इनसेट का मतलब क्या है? इंडियन national satellite series of satellites जो मिले. In the space transportation, in this space transportation domain, it was the commissioning of the satellite launch vehicle 3 SLV, satellite launch vehicle 3 project in early 70s 1970s, the first indigenous experimental satellite launch vehicle that served as the beginning of the enduring partnership between ISRO and Indian industries, जो कि एक तरह से इंडिजिनस यानी खुद का एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बन गया, जिसने कि पार्टनरशिप स्टार्ट इसरो एंड इंडियन इंडस्ट्रीज के बीच में एक पार्टनरशिप का बिगिनिंग जिसकी वजह से स्टार्ट हुआ SLV-3 की वजह से, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3. An all-solid four-stage launch vehicle, the SLV-3 was designed for placing satellite weighing 40 kg इन लो अर्थ ऑर्बिट, यानी लो अर्थ ऑर्बिट में 40 किलो तक का जो वेट है वो ले जाने की क्षमता जो SLV-3 के अंदर थी. SLV-3 हैड इट्स सक्सेसफुल लॉन्च ऑन 18 जुलाई 1980s. SLV-3 का सक्सेसफुल लॉन्च 80 में हुआ था. 71 के दौरान जो है ये SLV बन गया था. इसका सक्सेसफुल लॉन्च 80 के दौरान 1980 में हुआ था. थ्रस्टिंग इंडिया इनटू दिस सेलेक्ट लीग ऑफ 6 कंट्रीज, यानी 6 कंट्रीज के लीग में शामिल कर दिया इंडिया को. 6 कंट्रीज, सेलेक्टिंग द लीग ऑफ 6 कंट्रीज कहाँ पे है? 40 किलो का वजन, 6 कंट्रीज विद द कैपेबिलिटी टू लॉन्च सैटेलाइट ऑन देयर ओन, 6 कंट्रीज की लीग में शामिल हो दिया. ऑन द हील ऑफ SLV-3 वाज कमीशन द ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. ASLV का मतलब ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट इन द अर्ली 1980s, द नेक्स्ट स्टेप ऑफ इवोल्यूशन इन लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी. इवोल्यूशन का नेक्स्ट स्टेप क्या? ASLV. SLV-3 क्या है? ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. The next step of evolution in launch vehicle technology. The two launch vehicle SLV-3 and ASLV validated the critical launch vehicle technologies and gave ISRO the confidence to reach the next level with the Polar Satellite Launch Vehicle PSLV project commissioned in mid 1980s. During the same period, INSAT 1B, India's first multi-purpose ऑपरेशनल सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड इन 1983. इनसेट 1B 1983 में लॉन्च हुआ था. इनसेट 1B कब लॉन्च हुआ था? 1983 में लॉन्च हुआ था. डेमोन्स्ट्रेटिंग इट्स एबिलिटी टू ब्रिंग अबाउट अ इन इंडियाज टेलीकम्युनिकेशन
टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग डोमेन। यानी इनसेट आईबी का क्या रिवॉल्यूशन लाया इसने इंडिया के टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र में, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्र में, और वेदर फोरकास्टिंग, मौसम का जो पहले से अनुमान लगाते हैं ना, तो वो कैसे होता है, इनसेट आईबी की मदद से। 1983 में वो हुआ था लॉन्च। India's ability to design, build, and maintain a complex remote sensing satellite was demonstrated in 1988 when IRS-1A, the first operational satellite built in India, started imaging the Earth. तो इंडिया की जो एबिलिटी है डिज़ाइन करने का, बिल्ड करने का, मेंटेन करने का कॉम्प्लेक्स रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का जो एबिलिटी है, जो क्षमता है, वो कब दिखाई दिया? 1988 में दिखाई दिया, जब IRS-1A पहला ऑपरेशनल सैटेलाइट बनाया गया भारत में, स्टार्ट कर दिया अर्थ का इमेजिंग करना। Images sent by that satellite circling the Earth from its 900-kilometer high polar orbit were utilized in various diverse fields such as agriculture, groundwater prospecting, mineral survey, forestry. यानी 900 किलोमीटर दूर से हाई पोलर ऑर्बिट पे जो इमेजिंग भेजी जा रही थी उस सैटेलाइट के जरिए से, IRS-1A के जरिए से, उसको यूटिलाइज करा जाने लगा एग्रीकल्चर, ग्राउंड वाटर प्रोस्पेक्टिंग, मिनरल सर्वे, फॉरेस्ट्री जैसे फील्ड्स में। During the 1990s, ISRO began building INSAT-2 series of multi-purpose satellite indigenously. At the same time, systematic uses of imagery from our remote sensing satellite for tasks like crop yield estimation, groundwater and mineral prospecting, forest survey, urban sprawl monitoring, wasteland classification, and fisheries development began. The optimal uses of onboard capabilities of INSAT and remote sensing satellite was coordinated under interministerial mechanisms such as INSAT Coordination Committee, ICC, and नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, NNRMS। जो इनसेट है, इनसेट का मतलब क्या है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट्स। जो इंडियन नेशनल सैटेलाइट्स है, हमारे जो भारत के सैटेलाइट्स हैं, इनकी जो ऑप्टिमम इस्तेमाल है, और जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, इनका ऑप्टिमम इस्तेमाल को कोऑर्डिनेट किसको और कर रहे थे? आईसीसी और एनएन। आईसीसी का मतलब क्या? इंसेट कोऑर्डिनेशन कमेटी, और एनआरएमएस का मतलब नेशनल नेचुरल management system. Today, India has a fleet of advanced remote sensing satellites equipped with high resolution and multispectral cameras dedicated to the themes of cartography, resource survey, ocean and atmospheric applications. The INSET system with over 300 transponders in the C band, extended C band, Ku band, Ka, Ku band, and S band provides services to telecommunication, television broadcasting, radio networks, satellite news gathering, societal application, weather forecasting, disaster warning, search and rescue operation, हाई थ्रूपुट सैटेलाइट्स, एच टी एस का मतलब क्या? हाई थ्रूपुट सैटेलाइट, जैसे GSAT-11, GSAT-29, GSAT-19, GSAT-11, GSAT-29, GSAT-19 आर सपोर्टिंग द डिजिटल इंडिया कैंपेन बाय बूस्टिंग द ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू द रूरल एंड इनएक्सेसिबल ग्राम पंचायत इन द कंट्री। यानी देश के जो गांव क्षेत्र की जगह है, जैसे ग्राम पंचायत वाली जगहों में जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की जो जिम्मा किसने लिया? GSAT-11, 29 और 19 ने, जिसकी वजह से डिजिटल इंडिया कैंपेन को बूस्ट मिल रहा है। The transponders on these satellites will bridge the digital divide of users, including those in Jammu and Kashmir and northeastern region of India. The space transportation domain, with the successful advent of the Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) 1994 में हुआ था, जन्मा था। PSLV Polar Satellite Launch Vehicle 1994 में witnessed a quantum jump in indigenous launch capabilities। यानी जो खुद का इंडिया का जो लॉन्च कैपेबिलिटीज है, उसमें जंप कब से आया? 1994 से आया। The vehicle has proven to be a workhorse of ISRO, logging over 50 successful missions, launching national as well as foreign satellites On 15 February 2017, PSLV created a world record by successfully launching 104 satellites in orbit during a single launch. Well, as number go, it was undoubtedly a record at the time, but the real significance of the achievement is the immense confidence reposed by the foreign countries in the capability of the launch vehicles। यानी जो रियल सक्सेस क्या है कि बाहर के देश जो है हमारी कैपेबिलिटी के ऊपर कॉन्फिडेंस जता रहे हैं,
विश्वास कर रहे हैं, तो अपने सैटेलाइट्स हमारे पीएसएलवी से लॉन्च करा रहे हैं विद द सॉलिड एंड लिक्विड प्रोपल्सन टेक्नोलॉजीज परफेक्टेड थ्रू एसएलवी 3 एएसएलवी 3 ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी 3 पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द नेशन embarked upon a highly challenged quest to master the complex cryogenic technology, जो कि हमें पहले नहीं मिल रही थी, इंडिजिनियसली हमने बनाया था क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी. The commissioning of the Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV) Geosynchronous Satellite Launch Vehicle in 1990s was a step in this direction. The launch vehicle was designed with three stages, including the cryogenic upper stage with four liquid strap-ons. Cryogenic technology involves the storage of liquid hydrogen and liquid oxygen at low temperature. Cryogenic technology में liquid hydrogen और liquid oxygen को H2 और O2 को जो है कि लो टेम्परेचर में स्टोर करना होता है. क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, लो टेम्परेचर के अंदर स्टोरेज करनी पड़ती है. मटेरियल यूज्ड टू ऑपरेट एट दिस वेरी लो टेम्परेचर चिलिंग प्रोसेसेस एंड इंटरप्ले ऑफ इंजन पैरामीटर्स मेक्स द डेवलपमेंट ऑफ द क्रायोजेनिक स्टेज अ वेरी चैलेंजिंग एंड कॉम्प्लेक्स टास्क. यानी माइनरल्स जो इस्तेमाल करे जाते हैं इन चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए लो टेम्परेचर पे चिलिंग प्रोसेसेस और इंटरप्ले करना इंजन पैरामीटर्स को, क्रायोजेनिक स्टेज का डेवलपमेंट बहुत ही चैलेंजिंग और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं. जो चीज़ है, ये जो चीज़ें हैं, क्या कौन सी चीज़ है कि मिनरल्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा कि ये जो चीज़ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लो टेम्परेचर में रहे, चिलिंग प्रोसेसेस, इंजन पैरामीटर्स का इंटरप्ले करना, ये क्रायोजेनिक स्टेज को थोड़ा चैलेंजिंग बनाता है. विद द सक्सेसफुल क्वालिफिकेशन of the indigenously developed cryogenic upper stage CUS cryogenic upper stage in the GSLV D5 flight on 5 January 2014, ISRO demonstrated its mastery of cryogenic rocket propulsion, including the one in January 2014. The vehicle has had 6 successful flights over the past decade. Past decade. The next generation launch vehicle of ISRO. Next generation launch vehicle of ISRO with the capability of putting 4-ton payload in GTO came in the form of GSLV Mach 3 designed with two solid strap-ons, a core liquid booster and a cryogenic upper stage. यानी एक नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल इसरो का पीएसएलवी जीएसएलवी के बाद जीएसएलवी मार्क 3 है, जो के साथ एक कोर लिक्विड बूस्टर है और क्रायोजेनिक अपर स्टेज है इसमें. LVM-3X Care mission, the first experimental suborbital flight of GSLV Mark 3 was on 18 December 2014 and launched the Crew Module Atmospheric Re-entry Experiment (CARE). Crew Module Atmospheric Re-entry Experiment. The CARE module began its return journey and a little later re-entered the Earth atmosphere. It was successfully recovered over the Bay of Bengal over 20 minutes after its launch. Subsequently, after two successful developmental flights and with the injection of Chandrayaan-2 into Earth parking orbit in July 2019, GSLV Mark 3 successfully entered into its operational phase. Indian space program always focused on the development and utilization of space technologies to achieve the overall development of the country. Despite its emphasis on applications, ISRO has pursued many space science projects to perform meaningful exploration of space. India's first satellite, Aryabhatta, was a scientific satellite. After Aryabhatta, ISRO entered into the realm of science missions, again with a unique mission, the Space Capsule Recovery Experiment (SRE-1). Space Capsule Recovery Experiment. Space Capsule Recovery Experiment 1 (SRE-1). Launched by PSLV in January 2007, SRV-1 was a space capsule research recovery experiment. SRV-1 with its scientific experiments orbited the Earth for 12 days and was successfully deorbited and recovered over the Bay of Bengal. This proved several technologies necessary for reusable launch vehicles and human spaceflight. Space Science Mission of India, Chandrayaan-1 Mars Orbiter Mission, Astrosat Chandrayaan-2 have caught the attention of millions of Indians as well as outside world. Launched by PSLV on
22 October 2008, the 1380 kg Chandrayaan-1 spacecraft was successfully navigated to the moon in 3 weeks and was put into an orbit around the moon. ये हुआ जो 22 अक्टूबर 2008 में 1380 किलो का चंद्रयान 1 जो स्पेस क्राफ्ट है वो सक्सेसफुली नेविगेट किया गया, मून में नेविगेट किया चला 3 सप्ताह तक, 3 वीक्स तक, एंड वॉज पुट इन द ऑर्बिट अराउंड द मून। और उसको जो चंद्रमा के मून पर चंद्रमा के ऑर्बिट पर डाला गया, 3 हफ्तों तक डाला गया। 2008 में लॉन्च हुआ था चंद्रयान 1। 2008 में 1380 किलो का पेलोड था, पीएसएलवी से लॉन्च हुआ था। On November 2008, when a TV-sat seized Moon Impact Probe separated from Chandrayaan-1 spacecraft and successfully impacted the surface of the Moon, India became the fourth country to send a probe to the lunar surface after the US, Soviet Union, and Japan. Later, when the Chandrayaan-1 exclusively discovered water molecules on the lunar surface, it was widely as a path-breaking discovery. अपलिट मतलब जब बाद में जब चंद्रयान 1 ने डिस्कवर किया पानी के कण, पानी के मॉलिक्यूल्स जो लूनर सरफेस में, तब ये एक पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी साबित हुई। अपलिफ्टेड बाय द सक्सेस ऑफ Chandrayaan-1, ISRO embarked on the Mars Orbiter mission for demonstrating India's capability to build, launch, and navigate an unmanned spacecraft to Mars. Launched by PSLV on 5 November 2013, the 1340 kg Mars Orbiter spacecraft encountered Mars on 24 September 2014. With this, ISRO has become the fourth space agency to successfully send a spacecraft to Mars orbit. यानी ये जो क्या बताया कि अब चंद्रयान 1 के सक्सेस के साथ साथ इसरो ने मार्स ऑर्बिटर मिशन ये मार्स ऑर्बिटर, इसरो का मार्स ऑर्बिटर मिशन ने डेमोस्ट्रेट किया इंडिया की कैपेबिलिटी है कि वो बना सकता है, लॉन्च कर सकता है, नेविगेट कर सकता है अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट, यानी वो स्पेसक्राफ्ट जिसमें कि लोगों की ज़रूरत ना हो, अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट को मार्स में भी भेज सकता है, जो कि पीएसएलवी ने लॉन्च किया था 2013 में। 5 नवंबर 2013 में 1380 किलो का पेलोड लेके, 1380 किलो का वजन लेके मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट ने एनकाउंटर किया मार्स को 2014 में, 24 सितंबर 2014 में, जिसके साथ इसरो जो है चौथा स्पेस एजेंसी बन गया जो भेज सकता है क्राफ्ट मार्स ऑर्बिट पर। Astrospace, launched by PSLV in September 2015, is the first dedicated Indian astronomy mission aimed at studying celestial sources in X-ray, optical, UV spectral bands simultaneously. Astrosat recently made a major breakthrough by discovering one of the earliest galaxies in the extreme ultraviolet light. The Chandrayaan-2 mission, India's second mission to the moon, was successfully launched on 22 July 2019. 22nd July 2019, Chandrayaan-2 orbiter spacecraft was placed in its intended orbit. The 8 instruments on board the orbiter are continuously providing useful science data, which will enrich our understanding of the moon's evolution and mapping of the minerals and water molecules in polar regions. ISRO has also successfully established and operationalized navigation with Indian constellation Navik, which provides highly accurate position, navigation and time information to users in India and its surrounding. इसरो ने अपने आप खुद का जो है नाविक नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाविक बोल के एक ऑपरेशनल हाईली एक्यूरेट नेविगेशन सिस्टम बनाया है, जिसके ज़रिए से एक्यूरेट पोजीशन, नेविगेशन, टाइम इन्फॉर्मेशन मिल सकता है इंडियन यूजर्स को इंडिया में और इसके सराउंडिंग्स में। ग्लोबल स्टैंडर्ड बॉडी थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट G3GPP, विच डेवलप्स प्रोटोकॉल्स फॉर मोबाइल टेलीफोनी, has approved Navik, and major mobile chipset manufacturers have incorporated Navik in their releases. Further, through GPS aided geo augmented navigation, Gagan. GPS aided geo augmented navigation. Gagan means GPS aided geo augmented navigation. Gagan.
ISRO is providing satellite-based navigation services with accuracy and integrity required for civil aviation applications. इसरो प्रोवाइड कर रहा है सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सर्विस, सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, दे रहा है एक्यूरेसी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ, जो जरूरी है सिविल एविएशन एप्लीकेशंस के लिए, और प्रोवाइड करने के लिए बेटर एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट. Indian airspace. In the recent past, the Gaganyaan program approved by the Government of India in 2018